Leena Kapse, Assistant Professor from Julelal Institute of Technology College, would like to welcome you all again on the second day of FDP. It is an honor to introduce our distinguished guest speaker for today's session on the topic of performance excellence through ability enhancement courses. We are privileged to have with us Dr. Sujit Metre sir, the principal of SBCT College, Nagpur. His extensive academic and professional background is truly remarkable. He holds multiple degrees including BE, MBA in Finance, MA in Economics, MCom, and PhD in Investment Management. Furthermore, he is a NET qualified expert in both management and commerce and hold an AMIE certification. Sir has had a distinguished career spanning over 22 years, during which he has held various leadership positions in the field of education. Notably, he completed a teaching assignment. देऊन द्या त्याला पाहिजे. I request Lakshmi ma'am to please mute yourself. Yes, yes. Thank you, ma'am. Notably, he completed a teaching assignment as an Indian seconded visiting professor at the Asian Institute of Technology in Bangkok, Thailand, through Minister of HRD, Government of India. He has served as the former principal and director of Dr. Ambedkar Institute of Management Studies and Research and Datta Megi Institute of Management Studies in Nagpur. He played a very significant role in leading efforts related to accreditation and the establishment of autonomy. He is also recognized as a member of various academic committees, including BOS, BOE, in business management at RTMNU. His research contributions are extensive, with more than 30 publications to his name, including Scopus Index paper, and he has reviewed papers for Scopus Index Journal. He has co-authored a book titled Performance Management Practices for IT Companies. In addition to this, in addition to his academic endeavors, he has been actively involved in extension assignments, including the initiation of the Abhiyan project for social causes, which raised over rupees 8 lakh. He has also undertaken consultancy projects that have been commercially utilized by the organizations. Sir's dedication to education, substantial research contribution, and his leadership in diverse academic and administrative capabilities truly distinguish him as an esteemed guest speaker for today's session. We eagerly anticipate his invaluable insights and expertise regarding the attainment of performance excellence through ability enhancement courses. Let us extend a warm welcome to Dr. Sujit Metre sir on this online session. Welcome, sir. Thank you. Over to you, sir. Thank you. I'm just sharing the screen. Hope it is visible. Can you see this? No, sir. Unable to see? Yeah, it is in process, sir. It is in process. You will see it. It is saying that it is sharing your screen, so it must be visible to you. Yes, sir. Now Yes, it is sir. visible. Now it is visible. So there is a lag. Yes, sir. We will adjust it. Okay. Now you can see this, right? Yes, sir. Okay. So the first request to all the participants is to forget the extensive introduction given by madam. Right? Because whatever you have done is the past, and the current task is to understand what are AECs, where do they fit in the new education policy, and I assume that all of you are teachers and some way or other will be associated with the AEC, and AEC, your notion and my notion are different, which I know. And because the topic given to me is performance excellence through AEC, and
it has raised multiple questions, and because it raised multiple questions in my mind, my duty is to transfer all those questions to you and collectively find out the solutions to them, right? So let us understand. So I will be asking multiple questions, and if it is possible and if the system permits, you can unmute and you can answer, right? That is where you will learn a lot. Otherwise, it will be a passive kind of session. Okay. But still, whatever may be the case, I will not stop myself from asking questions, right? So new education policy 2020, everybody is talking loud about it now. It is new, it is said, but it is old now. It is we have just celebrated third birthday of this policy. All of you must be aware about this third birthday, and still the baby is not on the ground. That means the delivery is yet to happen, right? So let us move ahead, right? So what are ability enhancement courses as far as this document of New Education Policy 2020 or National Education Policy 2020 is concerned, right? So are you aware that these are the ability enhancement courses proposed in the curriculum by the high level steering committee at this state? So may I know the answers, whether you are aware about this, that these are the two ability enhancement courses as far as group 1 is concerned? So they have divided ability enhancement courses into two parts. So we will be looking at these two things simultaneously. What is the meaning of ability enhancement, and what is the meaning of our title also? But then the first response I want from the audiences is that, are you aware about ability enhancement courses, or you are hearing this phrase for the first time? Unmute and answer, or you can reply to me on chat. Madam, what is the system? How can I get responses from the audience? They can unmute themselves. Okay, they can unmute and then, okay. So anyone, the first question is because I need to. Okay, please answer. Good evening, sir. Good evening. Sir, Himanshu Tiwari this side. Right. So Himanshu, can you answer this question? Sir, I have heard the term ability enhancement Okay. courses. Okay. Yes, sir. You have heard the course, but you don't know what is inside, right? No, Okay, no, sir. great. So I assume that similar is the level, or is there anybody in the house in the session who knows more than this? Anyone? Okay, if there is silence, let us move ahead. So ability enhancement courses, as far as this document is concerned, it talks mainly about two things. First is English communication, which is to be dealt in semester 1 and 2, and modern Indian languages. So modern Indian languages are what? Is Sanskrit a modern English language? Can I get your answer? Is Sanskrit a modern Indian language? No. No, it is not, right? So modern Indian languages have got their meaning, right? So this is group A of ability enhancement courses. Group B talks about skill enhancement courses, and because we are dealing with both of them, we'll go step by step. It might create a confusion in your mind regarding the words or the way I am playing with the words, right? So let us understand the basic words involved. First is the ability. The moment we talk about ability, we invariably talk about skills also, right? So ability is the potential of a person to do something, and skill is doing that thing in a best possible way, right? So when I say that the designers of this new education policy have thought about this, they have divided this AEC into two compartments. First compartment talks about ability enhancement, and second talks about skill enhancement. I repeat, the first compartment talks about ability enhancement. The second compartment talks about the skill enhancement. Ability enhancement is expected to be done
right, in the semester 1 and 2, and maybe skill enhancement is the course which they should pursue in third and fourth semester, right? So there has to be the third word also involved into it, and as I proceed, I will get. So first thing first, is the difference between ability and skill clear to the audience? Yes, sir. Yes, sir. Right. Great. Yes, sir. Right. Now comes the second word, which is the word which we often use, and that is, you have capability to understand about ability if you focus. So the word I am now going to discuss is capability. Capability. So many of us think that ability and capability are same, or skill and capability are same, or competence and capability are same, or is there any other word, similar word which you use? I use the word ability, capability, competence. Is there any other word which you normally use in line with these words? See, that word is capacity. That word is capacity, and therefore I said that I will like to first play with the word, because that understanding of those words. See, all these words are different words, and therefore, even if there is a minor difference, there is a difference between all these words which I have uttered just now. So the screen talks about word called capability, right? So when I talk about ability, ability is more basic and often means the capacity to do something regardless of its quality. Regardless of its quality. But when we talk about capability, it is not the ability to do something extra. It has got a negative meaning. It has got a negative meaning, right? So why I've given this title as, you have capability to understand about ability if you focus. This is very similar to saying that हमारा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बस पढ़ाई नहीं करता. सुना है ये डायलॉग? Have you heard about this? Yes, sir. Multiple times. Maybe हमने भी बोला होगा, right? So we are talking about capability, and capability that this word is having negative connotation, right? Right. So when I talk about ability, I am talking about possibility of success. When I am talking about capability, I am probably referring to it that है लेकिन वो successful नहीं होगा. He is intelligent but does not put efforts, and therefore marks उतने अच्छे नहीं आएंगे, grades उतने अच्छे नहीं आएंगे, something of that sort. So whenever I use the word capability, I use it in negative sense, and therefore capability as a word is not used in this particular document, right? Okay. So the next question which comes to us, because we are from engineering or management institutions, what abilities lead to better performance? Because in most of the cases you will see that management is PG and engineering is UG. If I consider this, when I say management, I'm talking about MBA. We are talking about engineering, we are talking about UG, right? So a manager necessarily must have, if the engineer has become manager, it means that the abilities which we are talking about is compute, draw, organize, teamwork, time management, stress management. The list is long, right? Manager must have all those capabilities along with ability to get things done in stipulated time period. So time management should be a people's man, persuasive, and so on and so forth. My question to you is whether I am talking about abilities or I am talking about skills here. I'm giving you 15 seconds to think and answer whether the words mentioned, like say computing is ability or computing is a skill, or it can be both. So my question to the class is whether we are talking is drawing is ability or drawing is a skill. 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 Skill, sir. Okay. Can you draw? एक अगर एक सिंपल बोल दे, तारे जमीन पे एक नेचर का पिक्चर निकालिए, तो निकाल सकते हैं? अगर आपको बोलूं कि प्लीज ड्रॉ इट, तो ड्रॉ कर पाएंगे? पेंसिल पेन जो भी है, पेपर है, आप ड्रॉ कर पाएंगे?
Is it possible for you to draw? To a certain extent. Yes, sir. You can. Please remember ability में क्या नहीं देखते? मैं पीछे जा रहा हूँ. Ability is more basic and often means that capacity to do something regardless of quality. So can you draw? Answer is yes. Right? Answer is yes. Can you communicate? The answer is yes. Can you communicate in English? Answer is still yes. Right? Is this thing clear what I'm saying? Drawing is ability. Right? Drawing good is Skill. it is skill, right? It is skill. So that is a minute difference. Why I am saying is that the document talks loud about all these types of courses which are in the offering, right? So a teacher who is dealing with those courses must know the expectation out of a course, right? Abilities, when we are talking about enhancement of certain thing, we must understand these things, right? Okay, now the next question to you is that what enhanced ability or skill lead to performance excellence? Then my set immediately changes. We say that the ability oblique skills, I'm using the word. Why? Because we were talking about drawing, merely drawing is ability, drawing good is a skill. So let us merge them for a time being, and let us think about engineer must have creativity. He must maintain work-life balance, ability to be happy, contented even in the adverse situation. These now are not related to engineering skills. Are you getting it? Managers having flexibility in dealing with the people. Okay, people's man, when I say flexibility in dealing with the people. So what we are trying to understand is that as a teacher, as a trainer, right, as somebody who is going to execute this ability enhancement course must be very clear about what is expected out of this course. What is expected out of this course? Now the rule of the game is that if you can measure it, you can improve it, right? So if you are interested in doing weight loss, तो पहले तो weight करना पड़ेगा, फिर weight loss के बारे में सोचेंगे ना, right? So first thing you need to measure, right? And this is where the problem is. First, you need to measure the current level of ability, and there are multiple questions now which I am going to raise. Number one, I have a class. Maybe I have a class of 60, and a class is a class wherein out of those 60, 10 are advanced learners, 10 are slow learners, and in between there is a chunk of students, right? Maybe 40 or so, okay, who are neither slow learners nor advanced learners. Got it? Right? So there, if you measure then their current levels of ability, you will know that they are at varied levels, right? So the real challenge for the teacher is, even if you measure it, in order to improve it, there is one person who is at this level, second is at this level, third is at the higher level, and you are trying about improving, enhancing those abilities, okay, with one single class, adopting one single curriculum, okay, employing one single pedagogy. Is this thing clear what I am saying it? बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Right. Yes, You are measuring, you are benchmarking कि यहाँ तक के level होना चाहिए, and it is quite possible कि there are certain students in the class who have already crossed benchmark. Then you design the course, you deliver the course, and then you keep on improving. This is a continuous process. So let us move. How to design course that lead to ability enhancement? Then the common discussion or common consensus was that let us have a more practical component and lesser theoretical component, right? General nature of the student who enroll for the course should be considered, and therefore I said measurement is must. So most of the time it should be activity based, both individual activities as well as group activities. Theory teaching through stories of relatable people, focus on
simple and interesting anecdotes. Component focusing upon the need for the ability or skill to develop must be included, and relating the ability or skill directly to the income. Last two components are the components often missed out. Often missed out when you start the course, right? See, the value proposition in the mind of my learner is not the same as it is in my mind. मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ा रहा हूं, इस पे मेरी रोजी रोटी है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है. से इट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, से इट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट, से इट इज ऑपरेशंस रिसर्च, से इट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग. मेरा सब्जेक्ट है, आई रिपीट, मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसको पढ़ा रहा हूं. राइट राइट टेक इट टू मराठी. A professor of Marathi, he is excellent in Marathi. He wants to teach Marathi to students, right? And now look at these two things. Same is the case with a person who is teaching management accounting. Same is the case with the teacher who is teaching, say, engineering drawing, or chemistry, or physics for that matter, or mathematics for that matter. Everybody says that his subject is a very important subject. Is there any difference in opinion here? I'm asking the question. Is there any difference in opinion here that whatever you teach is important? Yes, sir. Yes, sir. There is no. There is deviation from this thought, or you think that yes, it is important. Yes, it is important, sir. Yes. So I teach Taking that. entrepreneurship development. It is important. Somebody teaches accounting. It is important. Somebody teaching English, compulsory English, is important, and Marathi is important. Where is the issue? Issue is there are no components focusing upon the need for the ability or skill to be developed. Right? So most of the time we missed on the why. Right? So next thing is, in order to this, focusing upon the need for the ability, the language which most of the students understand is the language of money. The language of money. So you must be in a position to relate directly to the outcome in terms of money. So this may be the difficult task, or it can be treated as a challenge, but then every trainer, teacher, or coach must know this. Whatever he is good at, why other person should be made good at, right? So that other person should understand. It is good that you know, and your roji roti or your earnings depend on what you know. But then why other person also should be in a position to understand this or acquire those abilities, you should be in a position to explain, right? Now, the question is, important question, what should be the outcome of these AECs, right? So I'm just writing it down, right or wrong, we will discuss. First is, student should be able to demonstrate the ability. Do you think that this is the outcome of ability enhancement course specifically who have understood or gone through the definition of ability? I ask you the question, is it a right outcome to mention at the beginning? Yes, sir. Yes. So are you trying to mix skills with abilities? Keep it this in mind that you said yes, right? Right. Yes, So students should be able to state, enlist, record the need to develop such abilities. Perfect. Students must be able to tell that I must have this ability because, right? So that gives you syncing. That means student is in sync with whatever you are telling him, whatever contents are being delivered, right? Third, the student should be able to compare and contrast the ability learned with the lack of such ability in students taking admission to the particular program. Perfect, perfect. अगर ये ability आपके पास है तो क्या होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा? The teacher should be in a position to understand. We are talking about the last 2 points of the last slide, right? The student should be able to tell various methods through which such abilities can be enhanced, improved, right?
Okay, so there is doubt about the first outcome, which is student should be able to demonstrate. Right? The moment you use the word demonstrate, you are into domain of skill. You have crossed the domain of ability. I repeat, the moment you say demonstrate, you have crossed the domain of ability. You are into the domain of skill. Hope I'm clear about this. Yes, sir. Okay, let's move. Now the question, what pedagogy best suits AEC? AEC stands for what? Ability Enhancement Course. So these are the things which you must have in your classroom. Group activities, discussion methods, presentations and seminars by students, case studies of people who enhanced abilities in their workplace and made a difference in their life, and students to take role of teacher for more involvement, or you can involve the advanced learner into this process. What is the problem with this pedagogy? I will talk with the problem with the word pedagogy in the next slide, but then looking at these methods of imparting ability enhancement through ability enhancement courses, where do you see is the bottleneck? Please, any one of you can reply to me that if you want to conduct this group activities or discussion method into your classroom, class of a 60, I'm assuming, where do you see is the bottleneck? Maybe presentation, seminars by student, where do you see a bottleneck? अच्छा, इसमें क्या तकलीफ है? ग्रुप एक्टिविटीज करने में क्या तकलीफ है? आप कितनी बार ग्रुप एक्टिविटीज कंडक्ट करते हो while teaching your courses? हर बार, बार बार, बहुत कम बार, कभी नहीं? Are the options? Can you answer me? बहुत बार करते हैं सर. बहुत बार करते हैं. What are the issues, madam? सर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, आंसर्स नहीं देते. Okay. And are there any issues in recording their performance at your end? यस सर. हम एक व्यक्ति है और वो 60 लोगों को, 50 लोगों को या 10 लोगों को, जो भी एक्टिविटी का साइज है, ग्रुप साइज है, उसको मॉनिटर कर रहा है. Are there any issues in recording the things? The answer is yes. Yes. Right? The answer is that there is no, what you can say, science involved into the recording or the assessment. Are you getting it? Yes, sir. Right. So maybe first part of the group activity, you are very, very particular about it, but then when it is at the end of it, probably you also lose the control over it, right? Students also lose the interest over it. So you try to understand, but then the word pedagogy is not suitable for AEC for the simple reason I'm asking you this question. Do you consider your students as adult learners? Please answer me. Yes, sir. They are right. So pedagogy are for children. The correct word is andragogy. That means the methods or techniques used to teach adults. This is where the problem is. यहाँ उपस्थित जितने भी टीचर्स है, उन्होंने अगर इस शब्द के बारे में इसके पहले सुना नहीं होगा, तो वो बड़े बच्चों को छोटे बच्चों जैसे पढ़ा रहे थे, ये मैं अज्यूम कर लूंगा. ठीक है? ठीक है या नहीं है? यस सर. राइट. Yes, sir. अब इसके कारण क्या प्रॉब्लम होते हैं? जो भी कंप्लेंट है ना, बेसिक कंप्लेंट्स ऑफ टीचर, ये इसके कारण है. क्या कारण है? बड़े बच्चों को छोटे बच्चों जैसा पढ़ाया जा रहा है. हमारा कोई फॉल्ट नहीं है. इसलिए हमारा कोई फॉल्ट नहीं है क्योंकि हम में से कोई भी बीएड करके नहीं आया है. Nobody is expert of education here. We are expert in our domains. अगर मैं मैनेजमेंट का टीचर हूं तो मुझे मैनेजमेंट आता है. टीचिंग आता है कि नहीं, आई डोंट नो. इंजीनियरिंग का हूं, मैं शायद पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट इन इंजीनियरिंग हूं, लेकिन मैं टीचर हूं कि नहीं, वेदर आई एम अवेयर अबाउट दी टीचिंग टेक्निक्स, मुझे मालूम नहीं, बिकॉज आई हैव नेवर लर्न देम. वो कभी भी मेरे कोर्स का हिस्सा नहीं थे. नॉट इवन एट पीएचडी लेवल, नॉट इवन एट दी पीजी लेवल, जिसके लिए मतलब पीजी क्यों करते हैं, तो इसी फील्ड में आने के लिए करते हैं. वहां तो भी कुछ तो भी होना चाहिए. मिनिमम एक पेपर होना चाहिए. जो बीएड वाला सीख लेता है वो शायद पीएचडी वाला गोल्ड मेडलिस्ट नहीं सीख रहा है. एंड देयरफॉर
we say that gold medalist है लेकिन क्लास परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, 60% है, बॉर्डर लाइन है, लेकिन क्लास परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ये क्या है? नथिंग इज हैपनिंग साइंटिफिकली, ये इसका मतलब है. लेट अस मूव. So what is the difference between child and adult learning? Right? So the andragogy assumes certain things. Number one assumption is students are self-directed, two-way and cooperative learning helps. I repeat, students are self-directed, two-way and cooperative learning helps. And this is where the doubt starts. The teacher never thinks that the student is sufficiently motivated to learn. Do you agree with me? Yes, sir. Right? He is forced to learn and so on and so forth. What is? Yes, sir. Right. But the problem is that this is our assumption. Maybe because this is our assumption, we get cases, right? We get data which supports our assumption. बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है. क्लियर? ये मेरा स्टेटमेंट है. दिस इज माय हाइपोथेसिस. आई प्रोसीड विथ माय हाइपोथेसिस, और मैं, क्योंकि ये मेरा हाइपोथेसिस है, मैं उसको प्रूव करता हूँ. ठीक है? लेट अस मूव. लर्नर्स डिपेंड लेस ऑन टीचर्स. हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि दे शुड डिपेंड मोर ऑन टीचर्स. राइट? बराबर है. तो लॉजिक कैसे आते हैं फिर? इंटरनल्स मेरे हाथ में है. Are you getting it? Yes, sir. उनको खुला नहीं छोड़ते. राइट? It is a motivational approach. Many of us follow it, but most of us don't follow it. Right? And the most important thing in the assumption of andragogy is that the basic job of a teacher or teaching learning process is to explain to the student how to learn. That's it. Right? So is it sounding more like Amir Khan? वो मूवी में यही बोला गया था ना? जी आप सर. सब्जेक्ट जानते हैं बट आप शायद पढ़ाना नहीं जानते. आपको मैं पढ़ाना कैसे वो सिखा रहा हूँ. राइट? सो वेयर द थिंग्स वेयर रॉन्ग. राइट? बेसिकली मैनेजमेंट के टीचर शायद इसमें थोड़े से इम्प्रूव होंगे, बट बिकॉज वो इंजीनियरिंग के टीचर्स है, दे आर मोर रिजिड इन देयर अप्रोच, क्योंकि उनके पास 12वीं पास हुआ ही बच्चा आता है. Right? So this is where the issue is. I'm just discussing the basic where we are going wrong as far as this ability enhancement is concerned. We ourselves are not clear about what is happening, right? And more so about those persons who have heard this andragogy for the first time, right? Now, very important question is that when we say that उसकी ability enhance करना है, उसकी ability enhance करना है, हाँ करना है, तो उसको परफॉर्म भी करना होगा. कहाँ का परफॉर्म करना है? क्लासरूम में कि क्लास के बाहर में? व्हाट इज योर आंसर? Out of the class. ओके, एंड दिस इज रॉन्ग आंसर. Both. Sir, both. Both. बोथ इज आल्सो रॉन्ग आंसर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं. इसका बहुत छोटा मिनिमल ऑब्जेक्टिव है. एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स 2 ही क्रेडिट का कोर्स है और 2 ही सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा. ये इसलिए है कि अगर कोई पीछे से आगे आते वक्त एक मिनिमम, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस, भी हासिल नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो रीड और राइट इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ये कोर्स है. इसका मतलब है जो बहुत एक्सेलेंट होगा इसमें, जिसने वो एबिलिटीज ऑलरेडी क्रॉस कर दी होंगी, उसके लिए ये कोर्स बना ही नहीं है. आर यू गेटिंग इट? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. भले ही आपका सब्जेक्ट है, आपके हार्ट के नियर का सब्जेक्ट है, आपकी इच्छा है कि सामने वाले ने उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ नहीं, एकदम बेसिक. रिमेंबर एबिलिटी की डेफिनेशन में क्या बोला था? क्वालिटी इज नॉट अ क्वेश्चन. उसको आना चाहिए. दैट्स इट. अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. Okay, let's move. What must be the outcomes of AEC, SEC and VEC? अब मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूं. AEC stands for Ability Enhancement Course. उसी का दूसरा टप्पा, उसके आगे का सेम 3 सेम 4 इज SEC, और तीसरा दैट इज स्किल एनहांसमेंट कोर्स. SEC stands for स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस, और तीसरा इज वोकेशनल. राइट?
स्किल कोर्सेज बोलेंगे या वोकेशनल एनहांसमेंट कोर्सेज? मैंने वैसे VSC बोलते हैं उसको, VEC नहीं बोलते, वोकेशनल स्किल कोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। मैं उसको साउंड अच्छा करने के लिए उसको VEC बोल रहा हूं, बट VEC में V इंपॉर्टेंट है, वोकेशनल। सो यू हैव गॉट एबिलिटी, यू हैव गॉट स्किल एंड यू हैव गॉट वोकेशनल स्किल। इनकी लेवल अलग अलग है, समझ में आ रहा है आपको? जी जी, राइट। लास्ट क्वेश्चन टू सेट द नैरेटिव, लास्ट क्वेश्चन टू सेट द नैरेटिव। मुझे बताओ AEC में क्या देखना है हमको? बच्चे को रीडिंग आनी चाहिए, क्लियर? यस सर। इट इज कम्युनिकेशन। SEC में क्या देखना चाहिए हमको? रीडिंग फ्लुएंटली। मतलब क्या? उसको कॉमा समझना चाहिए, उसको इंग्लिश के वर्ड समझने चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। यहां तक का क्लियर? यस सर। ओके, अब ये देखिए, व्हाट इज दिस? VEC। ये दोनों स्किल्स को कैन ही कन्वर्ट इनटू वोकेशनल? इससे वो पैसे कमा सकता है क्या? बाय गिविंग वॉइस ओवर। सो अ कोर्स स्पेसिफिकली डिजाइन maybe to become anchor, right, to become voice over artist, ये सारे क्या है? It is coming out of the basic ability of reading, right? So I'm attaching reading aloud fluently and reading for voice overs। ये तीनों की लेवल का डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। Yes, no? अब मुझे बताइए, VEC can you make it compulsory? No, it is student's choice। SEC can you make it compulsory? No, it is student's choice। AEC is made compulsory। Student have no choice but to attain that minimum ability। Is this thing clear? यस सर। This thing, let us move। What performance excellence is expected through AEC? Remember, basic level inequality, right? Remember, basic level inequality। So the theory of performance excellence as far as AEC is concerned is limited to very basic level, right? Pronunciation गलत कर रहा है, गलत जगह रुक रहा है, that is all, right? चलेगा, right? Because the first thing is ability। कर पाएगा क्या बेटा? इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ पाएगा? राइट? उसने हाँ बोलना चाहिए, उसके लिए उतना प्रिपेयर करना है। आई रिपीट, मैं बच्चों को उस लेवल के लिए तैयार कर रहा हूं कि वो सिर्फ बोले कि हाँ कैन। आर यू गेटिंग इट? यस सर। समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? Sir, please repeat। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सिर्फ यहाँ स्किल में आपको स्किल करना हो। आप जब तक आ रही है क्लियर, तब तक के मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर आ रही है वॉइस? यस सर। Okay. Yes, sir. Right. So remember the basic level inequality theory as far as this AEC is concerned. If this AEC is related to English communication, which is a compulsory course across, इसका मतलब क्या? BSc वाले को भी कोर्स है, BE वाले को भी कोर्स है, BA वाले को भी कोर्स है। कौन सा? इंग्लिश कम्युनिकेशन। कोई ना कोई फॉर्म में इंग्लिश तो सब लोग पढ़ते थे। एनी ग्रेजुएट यूज्ड टू लर्न इंग्लिश, राइट? राइट। सो अब हम अगर बात कर रहे हैं PG लेवल पे जाएंगे तो उसमें भी AEC will take some another form, but please remember we are talking about basic level inequality।
to explain this concept of basic level equality, I'm just suggesting you that if you are conducting this AEC, आपका basic काम है कि बच्चे को जब मैं पूछूं बेटा तू एक पेज रीड कर पाएगा, if reading is the objective, can you read it aloud, right? एक न्यूज़पेपर देता हूँ, maybe Financial Express, maybe Time of India, can you read the headline, right? उसने क्या बोलना चाहिए? Yes. Yes, ये लेवल तक करना is basic. Demonstrate reading skill में चला गया, right? So I'm moving ahead. अब ये थोड़ा सा डाइवर्जन है, उसको देख लेते हैं. ये तुमने बहुत बार सुना होगा, है ना? ये कहानी सुनी है? A mother and a baby camel were lazing around and suddenly the baby camel asked. ठीक है, क्या पूछा? जैसे मैं पूछ रहा हूं सवाल, वैसे उसने भी पूछा, राइट? सवाल कब पूछे जाते हैं? When something bothers you, right? So मेरा पहला काम क्या है? मेरा पहला काम क्या है? To create some botheration, ठीक है? Okay. Why do camels have humps? आंसर क्या है मदर का? हम डेजर्ट एनिमल्स हैं, and we need the humps to store water and right सर्वाइव करने के लिए. कहा? डेजर्ट्स में, जहां पानी नहीं होता. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका रेडी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देन व्हाई आवर लेग्स आर लॉन्ग एंड आवर फीट राउंडेड. मदर ने क्या बोला? ये भी क्लियर हो गया कि उनके पैर वैसे क्यों है? Yes. I can move around the desert better than anyone does. Okay. अब ये तीसरा सवाल आ रहा है. क्या सवाल आ रहा है? कि हमारे आईलैशेस इतने लॉन्ग क्यों है? इवन इतने लॉन्ग है कि मेरे साइड को, राइट? मदर का जवाब क्या है? ये हमको सेव करते, प्रोटेक्टिव कवर है. किसमें से? वो जो सैंड है डेजर्ट की और विंड है डेजर्ट का, उससे हमको क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. ये तीनों सवाल और उनके जवाब समझ में आए क्या आपको? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. तो रिपीट कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बता रहा है अभी, ठीक है? 3 सवाल 3 जवाब आए, राइट? दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, राइट? व्हेन यू से एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी मतलब आंसर करने की एबिलिटी है, ठीक है? सो वो क्या बोल रहा है? सो hump is to store water when we are in desert. Legs are for walking through the desert, and these eyelashes protect my eyes from the desert. Then what the hell we are doing in the? Here. ये दोनों माँ और बेटे कहाँ है? Zoo में. जू Zoo में. में. हाँ, Yes. डेजर्ट में नहीं है. डेजर्ट में नहीं है. समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? Yes, sir. बेबी को आए हुए सवाल अभी आपको समझ में आ रहे हैं? सवाल सही थे, जवाब Yes, सही sir. थे, सारा सही था. What is the moral of the story? Skills, knowledge, abilities and experiences are only useful if you are at the right place. अब मुझे बताइए, as a teacher, you know where your student is going. You know what is expected of that student when he graduates, right? Mainly known as graduate attributes. इतना तो सबको मालूम है. Yes. ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, ठीक है? POs, प्रोग्राम आउटकम्स, इतना मालूम है ना हमको कि इतना है. एक बच्चा 4 साल का 2 साल का डिग्री आउट होगा, डिग्री करके बाहर जाएगा, दुनिया में जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, काम करेगा, तो ही इज गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट दीज एट्रीब्यूट्स. वो ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इसका कम्युनिकेशन ऐसा होगा, गुड सिटीजन होगा, टीम पर्सन होगा. ये सारा चीज हमको मालूम है. यस नो? Yes. राइट? अब ये सब मालूम है, वो एंड है. दीज आर फाइनल आउटकम्स. उसकी बिगिनिंग, जैसे मैंने बोला, बिगिनिंग हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल, and the beginning is ability, and ability is instilled through ability enhancement courses. So remember the matrix जहां पे हमने बोला था, measure, benchmark, design, deliver and improve.
राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं ये आखिरी 3 लाइन. एज अ टीचर we must decide on abilities, skills and vocational skills. I repeat, we as teacher must decide. Student is not in a position to decide. ये समझ में आया बेसिक? Yes, sir. Now there is the issue here. और वो issue क्या है? The moment I do this, my assumption is, I repeat, my learner is adult learner, 18 साल से ऊपर है. सही है? Yes, sir. Yes, sir. Right. अगर 18 साल के ऊपर है तो he knows. But my assumption is that he is not interested, he is not knowing. ये उसके लिए अच्छा है लेकिन वो समझ नहीं पाता. That is what we say in the classroom or in the staff room. Yes, sir. हमारा नोशन तो यही है ना, हम अपने घर के बच्चों को भी यही समझाते हैं ना. तो अब नहीं समझ रहा है, लेकिन आज मैं बता रहा हूं या बता रही हूं, समझ ले, बाद में ये तेरे काम में आएगा. यही है डायलॉग. Yes, Yes, sir. राइट? तो मिसमैच कहाँ है? एज अ टीचर मैंने पहले ही क्रॉस कर दिया पहला assumption कि उसको नहीं समझ रहा है, मुझे समझ रहा है. ओके, एंड व्हिच इज ट्रू टू सर्टेन एक्सटेंट. वो भी कुछ पढ़ता है, एक्सपीरियंस, वो जो भी है उसके पास बुकिंग नॉलेज है. राइट? You have seen the world, you have seen your previous, you have seen previous batches where students climbing the ladder of success and failing also. So आपके पास एक क्या बोलेंगे एक्सपीरियंस का वो है which makes you eligible to decide on the activities and skills and vocational skills. Now the bracket important related to discipline specific courses and specific, I repeat, related to discipline specific courses and discipline specific electives. This is the major change which is happening in the new education policy or national education policy 2020. The student is going to be really expert in one domain of study. That means BSc PCM में नहीं होगी अभी. ये समझा क्या आपको मैंने क्या बोला? अरे समझा कि नहीं समझा? अब होंगे सारे कोर्सेज ऑनर्स के जैसे. तो ब्रैकेट विल डिसाइड मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है. बीएससी फिजिक्स. सो आई विल से बीएससी इन फिजिक्स, मतलब मेजर सब्जेक्ट है क्या हो गया? फिजिक्स हो गया. अब हम बात कर रहे हैं इफ समबडी इज गोइंग टू ग्रेजुएट इन फिजिक्स, उसको क्या एबिलिटीज चाहिए, उसको क्या स्किल्स चाहिए, उसको क्या वोकेशनल स्किल्स चाहिए, इसके बारे में अंदाजा वो फिजिक्स का प्रोफेसर ही लगा सकता है. इज दिस थिंग क्लियर? Yes, sir. राइट? अभी तक के सब मिक्स मैच था, चलता था, एवरेजिंग होता था. यहां से आगे एवरेजिंग चल नहीं रहेगा बिकॉज एबिलिटी और सेट ऑफ एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन वन स्पेसिफिक डिसिप्लिन. राइट? मेजर जिसको बोलेंगे, वन स्पेसिफिक डिसिप्लिन विल बी डिफरेंट देन अदर्स. अब हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि ठीक है, फिजिक्स में लगने वाली स्किल्स एबिलिटीज अलग है, केमिस्ट्री में लगने वाली स्किल्स एबिलिटीज अलग है. राइट? इंजीनियरिंग में लगने वाली स्किल्स एबिलिटीज अलग है, आर्ट्स में लगने वाली स्किल्स एबिलिटीज अलग है, कॉमर्स में लगने वाली स्किल्स एंड एबिलिटीज अलग है. लेकिन कुछ तो ऐसी एबिलिटीज होंगी जो कॉमन होंगी फॉर एनी यूजी और पीजी लेवल. ये जो कुछ कॉमन है उसमें द आइडेंटिफाइड थिंग इज इंग्लिश कम्युनिकेशन. आपको समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? Yes, sir. दिस इज बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड, जिसको हम हाइजीन बोलेंगे. बेसिक मिनिमम ये चाहिए ही चाहिए, इसलिए इट इज मेड कंपलसरी. जो नहीं चाहिए है वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो ऑप्शनल हो जाएगा, वो इलेक्टिव बन जाएगा. इज दिस थिंग क्लियर? हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. राइट? ओके. Sir. आप तक के सारी चीजें समझ में आ गई है? Yes, sir. राइट? Yes. तो मुझे बताइए कि
यूनिवर्सिटी अगर कुछ डिजाइन कर रही है और बच्चे को कंपल्सरीली लेना है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो स्किल एनहांसमेंट में आएगा, वो वोकेशनल स्किल एनहांसमेंट में आएगा, कि वो एबिलिटी एनहांसमेंट में आएगा? Ability enhancement. वो एबिलिटी में। अगर कोई चीज प्री कुक्ड है, वो प्री डिजाइंड है और वो सबको लेना ही है, वो कंपल्सरी है, तो वो बेसिक मिनिमम होगा, राइट? वो स्किल के लेवल पे भी नहीं जाएगा। जैसे स्किल आया, स्किल का चॉइस बीइंग स्टूडेंट सेंट्रिक करिकुलम स्टूडेंट को जाएगा। आपको डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. तो एबिलिटी को आपको देखने का है, आपको डिसाइड करने का, इवन इफ इट इज एबिलिटी इन से इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो बीए का बच्चा, बीकॉम का बच्चा, बीई का बच्चा, बीएससी का बच्चा, इनकी सबके एबिलिटीज की लेवल्स अलग होंगी। भले वो बेसिक होंगी, लेकिन उनकी लेवल्स अलग अलग होंगी। एंड दैट इज व्हाट दोज बोर्ड ऑफ स्टडीज मस्ट डिजाइन। जैसे अभी बोल रहे हैं कि अगर आप 4th ईयर ऑफ यूजी करोगे, राइट, मे बी बीकॉम 4 साल का या बीए 4 साल का करोगे, तो उस बच्चे को क्या आना चाहिए? रिसर्च आना चाहिए, राइट? सो रिसर्च विल बिकम अ कंपल्सरी कोर्स देयर। व्हाई? बिकॉज दे हैव डिसाइडेड इट कि ये होना ही चाहिए। ये स्किल के बगैर बच्चा काम नहीं कर पाएगा। दैट इज हाउ इट इज। यहां तक की क्लैरिटी आ गई आपको सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना? वेरी गुड। Yes, sir. सो अगर ये क्लैरिटी आ गई है, ये अगर क्लैरिटी आ गई है, तो हम अंत तक पहुंच भी गए हैं, राइट? अब आपको जो भी दिमाग में मेरे सवालों के कारण आए हुए सवाल होंगे, वो मुझे पूछ सकते हैं, वो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग। Participants, please ask your questions. क्वेश्चंस के लिए अभी 5-7 मिनट है, उसको आप पूछ सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं बताया, एकदम सिंपल बताया। क्या है वही बताया। आपको क्या करना है उसके बारे में अभी भी मैंने कुछ नहीं बताया। वो एईसी क्या है वो ही बताया। तो इन शॉर्ट मैंने ये बताया कि ये जो टाइटल था, एबिलिटी एनहांसमेंट थ्रू एईसी, ये थोड़ा सा डाइसी टाइटल था, ठीक है? उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये डिस्कशंस किए, ठीक है? अगर आपके पास कोई सवाल नहीं होगा, तो अब मैं आपको सही सवाल पूछता हूं, और वो सही सवाल है कि हम हमारे बच्चों को स्किल देना चाहते हैं, राइट? मराठी का टीचर भी, इंग्लिश का टीचर भी, इंजीनियरिंग ड्राइंग का टीचर भी, सारे ही लोग स्किल ही देना चाहते हैं। सबकी स्किल की डेफिनेशन अलग हो सकती है, सबका स्किल सेट अलग हो सकता है, लेकिन सारे स्किल देना चाहते हैं। सो एक डॉक्यूमेंट ऐसा भी बना है कि 21st सेंचुरी स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर 21st सेंचुरी लर्नर, या फिर आप बोलेंगे सिटीजन। उसमें एक स्किल है जो है क्रिटिकल थिंकिंग, राइट? सो अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी एबल बनाना है, तो उसमें उसकी खुद की सोच आनी चाहिए। यस नो? Yes, sir. Yes, तो sir. उसके लिए उसको क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए। सो ही शुड बी एबल टू थिंक फर्स्ट, एंड थिंकिंग इज एबिलिटी। वो सही थिंक करता है, गलत थिंक करता है, वो अलग बात है। वो हाई लेवल थिंकिंग करता है, लो लेवल थिंकिंग करता है, वो अलग बात है। द प्रॉब्लम विद करंट स्टूडेंट्स इज दैट दे आर अनेबल टू थिंक। सो थिंकिंग का एबिलिटी इंस्टिल करना कैन ऑल्सो बी द पर्पज ऑफ एईसी। मैं सिर्फ एक स्किल के लिए बात कर रहा हूं अभी। एक स्किल क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। आई शुड बी इन अ पोजिशन टू इवेल्युएट। मैं उसका क्रिटिक बन रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं इसके प्रोज और कॉन्स देख सकता हूं। यस नो? देख सकता हूं, Yes. राइट? राइट? सो मैं सोच सकता हूं। तो कोई सवाल है क्या? पूछो, नहीं तो मैं आपको सवाल पूछता हूं। ओके, अतुल गवा ने सवाल पूछा है कि हमें एबिलिटी कौन सी एनहांस करनी है, ठीक है? राइट? बेसिक ही है, बेसिक ही है। मैं आपको बोल रहा हूं कि where we fail in classroom is we are unable to relate
हम अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट है कि मेरा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे को नहीं समझ रहा है कि मेरा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वो इंग्लिश से दूर भाग रहा है, वो मैथ से दूर भाग रहा है, उसको उसको बाकी सारी चीजें बोर हो रही है, उसको बोर हो रहा है, ग्रॉसली बोर हो रहा है। मतलब कॉलेजेस हैव बिकम सेंटर जहां पे बच्चों को बोर होने के लिए बुलाया जाता है, टू द एक्सटेंट दैट मैं तो कितनी बार बोलता हूँ कि ये जो लेक्चर है जो तुम दे रहे हो वो तुम ही 60 मिनट फिर से सुन सकते हो। इफ नो, देर इज समथिंग रॉन्ग। सो मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने ढूंढना चाहिए कि जिससे वो रिलेट कर सके। एग्जाम्पल्स, ठीक है, मैं अभी आपको रिलेट करा के देता हूं, ठीक है। अभी गणेश जी आने वाले Yes. आने वाले हैं, आरती आरती बोलेंगे। सो जितने मराठी हो ना, जो हिंदी वाली आरती में कोई तकलीफ नहीं है, राइट। सो देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू से सुख करता दुख करता, राइट। और देर आर पीपल हु विल से सिंदूर लाल चढ़ाए, क्लियर। या फिर ये दोनों बोलने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, क्लियर है ना। Yes. कितने साल से कितने लोगों को आता है, मतलब सुख करता दुख करता? हाउ मेनी ऑफ यू? बहुत साल से। बहुत साल से बोल रहे हैं ना आप? हाँ, ऑलमोस्ट एवरीवन। तो कल्याणी, अतुल, ये सब लोग बोल रहे हैं कि इनको आता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ, हाँ, मेरे पास 3 मिनट है, मैं बोलता हूँ। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। ऐसे ही बोलते ना आप भी? थोड़ा सा ताल सुर में बोलते होंगे। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, यही बोलते होंगे ना? यस, वेरी गुड। सुख करता, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, सुख को करने वाला। दुख हरता, दुख को हरने वाला, ठीक है। आगे क्या बोलते हो तुम अतुल? आगे क्या बोलते हो? वार्ता विघ्नाची। यानी बताओ मेरे को। सी, अगर गणेश जी प्रसन्न नहीं हो रहे तो गणेश जी को हम कंफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए प्रसन्न नहीं हो रहे। क्या कंफ्यूज किया? पहले 2 वर्ड तो बोलो। अतुल, माइक बंद। यस सर। पहले 2 वर्ड माइक बंद करिए। पहले 2 वर्ड तो बहुत अच्छे बोले गणेश जी के लिए, सुख को करने वाला दुख को हरने वाला, और बाद में तुमने बोला वार्ता विघ्नाची और पॉज। ठीक है, तो ये बोलेंगे ये बोल क्या रहा है। फिर तुम जो बोल रहे हो वो तो तुमको भी नहीं समझ रहा है। नुरवी यानी क्या बता सकते हो? इज इट अ मराठी वर्ड नुरवी? पूर्वी इज सप्लाई, पूर्वी इज सप्लाई, इट इज अ मराठी वर्ड, सप्लाई है, राइट। प्रेम अंडरस्टैंडेबल, कृपा अंडरस्टैंडेबल, जयाची मतलब जिसकी, अंडरस्टैंडेबल। अब मुझे बताओ वो नुरवी क्या है? सालों से ना। अतुल, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हमको सजग रहना है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ, जो कुछ भी मैं बच्चों को करने के लिए बोल रहा हूँ, जो कुछ मैं भी कर रहा हूँ, एम आई इवेल्युएटिंग? मैं हर बार वाई पूछ रहा हूँ, क्या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? एम आई क्यूरियस माई सेल्फ? मैं क्यूरियस रहा ना, मैं बच्चे को अपने आप क्यूरियस बना देता हूँ, और बच्चा क्यूरियस बनाना वो एबल बन जाता है। तो मुझे बताओ अतुल, ये नुरवी वर्ड का मतलब बताओ। एनीबडी इन द क्लास? अब सबके लिए ओपन है क्वेश्चन, नुरवी यानी क्या? ऐसा कोई शब्द नहीं है मराठी डिक्शनरी में, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। और वो करेक्ट ऐसा था कि वार्ता विघ्नाची न उर्वी। अभी पॉजिटिव है, वार्ता विघ्नाची न उर्वी, यहां पॉज लेना था। हमने कहा पॉज लिया? हमने गलत जगह पॉज लिया। हम जब गलत जगह पॉज ले लेंगे, सामने वाला तो कंफ्यूज हो ही जाएगा। जैसे लॉर्ड गणेश को कंफ्यूज करने की इतनी ताकत इतने सालों से इतना कलेक्टिवली हम कर रहे हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग मीनिंग यूर सेल्फ। अगर तुम कुछ भी कर रहे हो एज ए टीचर, इट विल नॉट क्रिएट एनी इम्पैक्ट।
इसलिए मैंने सिर्फ एबिलिटी 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 यही वर्ड के ऊपर आपको पूरा 1 घंटा बात किया है, सिर्फ एबिलिटी। बाद में उसको ये समझ में आया कि क्या एनहांस करना है, तो अपने आप चीजें आ जाती, क्योंकि उतने इंटेलिजेंट हम हैं। उसको कैसे और यूनिक बनाना, कैसे और एंटरटेनिंग बनाना, ये सब हमको आता है। प्रॉब्लम ये है कि बेसिक्स और वो जो 2 अजम्पशंस, ठीक है, तो 2 अजम्पशंस की पेडागॉगी नहीं, पेडागॉगी मतलब बच्चे की सिखाने की चीज है, ठीक है। इट इज एंड्रागॉगी मतलब सीनियर्स को या एडल्ट्स को सिखाने का है। यहीं से मुद्दा शुरू होता है मेरे ख्याल से। अतुल, मैंने आपको बेसिक टिप्स बता दिए कि जो कुछ भी करोगे, सपोर्ट व्हाट एवर यू आर सेइंग, कोटलर ने बोला है इसलिए जरूरी नहीं, एनडी भट्ट ने बोला है इसलिए जरूरी नहीं, तुमको क्या लग रहा है, ठीक है। क्योंकि तुमसे ज्यादा अच्छा बताने वाले उसके मोबाइल फोन में 1000 लोग हैं, तुमसे ज्यादा अच्छे जवाब देने वाला उनके पास गूगल है, तो तुम उसको क्या दे सकते हो? तुम उसको क्या दे सकते हो जो गूगल से भारी है? और यूट्यूब में जितने भी बोलने वाले, जितनी भी भाषा में बोलने वाले, जितने भी ड्रेस्ड अप है, सारे लोगों से तुम कैसे अलग हो? लाइव एक्सपीरियंस। यस, यू कैन ऐड ऑन टू इट, बराबर है। वो अगर अलग है, आपकी स्टाइल अगर अलग है, तो बच्चा नेक्स्ट क्लास करने के लिए आएगा, नहीं तो क्यों आएगा? वो बोलेगा इससे तो अच्छा यूट्यूब पे मिल रहा है। समझ में आया? इससे ज्यादा मैं फ्रैंक नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बट स्टिल हमको बहुत कुछ करना है अंदर। बिकॉज एज ए टीचर अगर हम इसको नोबल प्रोफेशन नहीं बनाएंगे ना, तो वेरी सून दिस प्रोफेशन विल बी लॉस्ट टू ट्रेनर्स एंड कोचेस। आपको समझ में आ रहा है? आप यूट्यूब पे देखो, 990 रुपीज, 91 रुपीज, 21 रुपीज में क्या हो रहा है? एजुकेशन बेच रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? राइट, दे आर ऑल ट्रेनर्स या कोचेस, लाइफ कोचेस बोलते हैं। ये प्रोफेशन बहुत बड़ा हो रहा है। 2 रास्ते हैं ये इसको पार करने के। एक, आइदर यू स्टिक टू योर प्रोफेशन एंड जो कर रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से करो, या फिर यू ऑल्सो शिफ्ट टू ट्रेनिंग। टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन, बाकी सारा कमर्शियल है। इज दिस थिंग क्लियर? राइट, तो होपफुली कुछ तो सेंस किया होगा मैंने, और जो रहाटे मैडम ने मुझे टॉपिक दिया था उसको मैं थोड़ा सा जस्टिस दे पाया हूँ, दैट्स इट। मतलब उससे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी इस क्लास में, क्योंकि मैं कल परसों रात को भी बोल रहा था मैडम से कि मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके अंदर क्या बात करूंगा लोगों से। तो आज दिन भर मैं डिस्कशन मोड में था। मैंने लोगों से, स्पेसिफिकली इंग्लिश के टीचर से बात की कि व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू टीच इंग्लिश, ठीक है। सो वहां से जो कुछ भी आया मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश की। होपफुली आपको कुछ सेंस बना होगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. थैंक यू। Thank you so much, sir, for giving lots of clarity about this topic. It was so impactful session for us. I would like to extend my heartfelt thanks to Dr. Sujit Metre, sir, for gracing us with his profound insight and expertise. We are grateful to you, sir, for sharing your knowledge with us. This session has increased our level of understanding on performance excellence through ability as well as skills enhancement courses. I would like to thank Dr. Swati Rahate ma'am, head of the department, for giving us this opportunity. Without her guidance, we would not able to take this session. I would also like to express my sincere gratitude to all the participants who have actively engaged in this program over the past 2 days. Your enthusiasm and eagerness to learn are the driving force behind the success of this event. Once again, thank you so much, sir. Thank you. And I would like to thank all the participants, organizing committee, our institution's management, and participants. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all of you for those nice words. Thank you. Thank you, sir. 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 Excellent, sir.